Good morning students, welcome back to you BA first semester in English class. In today's class, I am going to discuss about Indian writer Sarojini Naidu. Studied in England at King's College, London and Girton College, Cambridge. Her first poetry collection was the Golden Threshold, 1905. Other famous works include The Bird of and The Broken Wing. Mahatma Gandhi inspired her to join the Indian freedom movement. She actively participated in the non-cooperation and civil disobedience movements. She became the first Indian woman president of the Indian National Congress
1925. As the woman governor of an Indian state her poems celebrate nature, love, patriotism, and Indian culture. Indian culture. She passed away on 2nd March 1949 in Lucknow. Sarojini Naidu is remembered as a symbol of courage, nationalism, and literary excellence. Excellence. Sarojini Naidu was born on 13 Feb 1879 in Hyderabad. इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था 13 February 1879. She is known as the Nightingale of India. Nightingale of India for her beautiful poetry. अपनी beautiful poetry की वजह से जानी जाती है. She was a famous poet. क्या कहते हैं पोएट थी, फ्रीडम फाइटर थी, पॉलिटिकल लीडर थी. हर फादर अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय was famous scientist, educator. Her mother Varada Sundari Devi was a poet. इनके अंदर ये टैलेंट यहाँ से आया था. She wrote her first long poem at the age of 13. 13 एज पर उन्होंने सबसे पहले लॉन्ग पोएम लिखी थी. She studied in England, King's College London and Girton College Cambridge में इन्होंने स्टडी की थी. Her first poetry collection was the Golden Threshold. The Golden Threshold 1905 में पब्लिश हुआ. Other famous works include The Bird of Time and The Broken Wings. ये इनकी पोएम है. Mahatma Gandhi inspired her to join the Indian freedom fight movement. महात्मा गांधी ने इनको इंस्पायर किया था इसके लिए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए. सी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है. सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी. कब हुई ये 1925 में. ओके बेटा. शी वाज द वुमेन गवर्नर. शी वाज द वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट कब आफ्टर इंडिपेंडेंस. हर पोएम्स सेलिब्रेट नेचर, लव, पैट्रियोटिज्म, इंडियन कल्चर, इन सब चीजों को इंक्लूड करती है. शी पास अवे ऑन 2nd
remembered as a symbol of courage, nationalism and literary excellence की सिंबल थी। ओके बेटा, आज की क्लास में इतना ही।